अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री 11th क्लास का चैप्टर 3 में जो रीड आउट करेंगे वो है प्लाज्मा स्टेट। Plasma is called the fourth state of matter. As we know, there are other three states: solid, liquid and gas. Plasma is called the fourth state of matter. Naturally हम कहते हैं कि यूनिवर्स का 99% consist of plasma state, but on earth it is rare. We can found it in stars, in sun and spaces between the stars, but on earth mostly it is man-made. Scientists have constructed special chambers to experiment with plasma in laboratories. It may occurs in lightning tubes, lightning bulbs, neon bulbs, etc. Now we will see how plasma is formed. When we heat any gas, first heated any gas, it may ionize. Like for example, we take hydrogen, which is diatomic, at 25 degrees centigrade. When it is heated up to 2000 degrees centigrade, it converts into monoatomic. So when a gas is heated, some electrons may gain energy and they releases from their atoms. तो हम जब गैस को जब आयोनाइज होगी तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज हो सकते हैं, and leaving the atom with positive charge, and electrons may have negative charge. So it will be a mixture of positive atoms or ions, electrons with negative charge and some neutral atoms also. ये मिक्सचर जिसमें आयंस मौजूद हों, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों और न्यूट्रल एटम्स मौजूद हों, इस मिक्सचर को किसी भी गैस के हम प्लाज्मा कहते हैं. So this ionized gas mixture consisting of ions, electrons and neutral atoms is called plasma. So plasma जो है वो different है solid, liquid and gases से, a distinct state of matter है. बट ये मोस्टली जो है ये लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर पर अकर होता है. जब ये बट इसको स्टेबल करना बहुत मुश्किल होता है. जैसे ही ये वैक्यूम से बाहर निकलेगा, ये किसी भी और एटम या मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके अपनी स्टेट चेंज कर लेगा. देयर आर टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा. Number 1, plasma must have sufficient number of charged particles. So as a whole ये respond करता है electric and magnetic field को, और इसमें जब particles inner move कर रहे होते हैं तो इसका अपना inner भी electric field पैदा होती है. And number 2 is as a mixture plasma में ions, प्लाज्मा में आयंस मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं एंड न्यूट्रल एटम्स मौजूद होते हैं. तो ओवरऑल प्लाज्मा पर न्यूट्रल चार्ज होता है. दैट इज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आयंस में बी इक्वल इन प्लाज्मा स्टेट. तो प्लाज्मा फाउंड प्लाज्मा कहाँ पाया जाता है? एंटायर यूनिवर्स जो है वो इज इन अ स्टेट ऑफ प्लाज्मा. प्लाज्मा इज फाउंड इन स्टार्स, interspace between stars,
लाइक हम सन को कह सकते हैं कि सन इज अ 1.5 मिलियन किलोमीटर ball of plasma which is heated by nuclear fusion. On Earth, it only occurs in a few limited places like lightning bolts, flames, and fluorescent lights. Next, we will see what are the benefits or uses or applications of plasma. Scientists have used plasma in many different ways. It is used in fluorescent light. Fluorescent light में एक ट्यूब में गैस होती है। जब इसको इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो ये गैस आयोनाइज हो जाती है and it is converted into plasma. Electricity flows through the tube. This electricity acts as a special energy and charges up the gas. This charging and excitation of the atoms create a glowing plasma inside the bulb. Then it is also present in neon signs, which is also a gas tube in which neon or any other gas is present. When electricity is passed, it creates plasma inside the tube and this plasma glows with a special color depending on the gas. Plasma is also used in sterilization of medical equipments. Sterilization of medical equipments. It is also used in generation of electrical energy from fusion, pollution control, and removal of some chemicals. Plasma lights up our offices and homes and makes our computer and electronic equipment work. It is also used in lasers and particle accelerators, help us to clean the environment, pasteurize foods, and make tools aeron resistant. So it was all about the benefits of plasma state. So please like and subscribe my channel. Thank you.